Hello, welcome, namaste, good morning, good evening, whenever you're watching this video. I welcome you with lots of warm hugs, virtual hugs, since COVID is going on and everything. And let's get started with today's video. आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है 5 things that you can learn online for free. Yes, हमें फ्री की चीजें बड़ी अच्छी लगती हैं. अगर सब्जी वाला भैया फ्री की धनिया मिर्ची ना देना हमें, तो हमें लगता है हमारा राइट किसी ने हमसे छीन लिया है. So that is why today's video is very, very special because we are going to talk about 5 things that you can learn online for free. So stay tuned. Okay, so शुरू करते हैं इस वीडियो को and not forget to like, share and subscribe if you really like the video. देख ही सकते हो आप लोग मेरा आज बैकग्राउंड कितना अच्छा है, एक तरफ ब्लू एक तरफ रेड ब्रिक्स हैं. सो काफी जिंगी फील हो रहा है मेरे को आज. माय एनर्जी इज वेरी वेरी वाइब्रेंट, सो प्लीज बेयर विद मी अगर थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाए तो. बट लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो 5 थिंग्स दैट वी कैन लर्न ऑनलाइन फॉर फ्री. सो सबसे पहला आता है फॉर ऑल द बैचलर्स एंड जितने भी नौसिखिए हैं जिन्हें कुकिंग मास्टर शेफ देख के एकदम से करने का मन कर जाता है, एंड जो लोग फूडीज हैं उनके लिए. यस, यू कैन लर्न loads of cuisines like Italian, Mexican, anything, Indian, Chinese, जो भी है. You can learn cooking online for free. इसके लिए आपको ज़्यादा क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. All you need is just to go type on Google और YouTube के कोई भी supposedly pasta और spaghetti टाइप करोगे, इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आएगी, ऑर्डर इन. ओके, घर पे आ जाएगा सामान. वॉच द वीडियो, वॉच द इंस्ट्रक्शंस एंड ट्राई योर हैंड्स आउट राइट सिटिंग एट योर होम. ओके, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है. घर पे बैठे बैठे सेफली अच्छा खाना बनाओ, खुद से सीखो और कुछ अच्छा काम करो, एक नई स्किल सीखो. खाना बनाना सिर्फ लड़कियों का काम नहीं होता है. ओके, वो एक लाइफ सेविंग स्किल है जो सबको आनी चाहिए. ओके, लेट्स मूव ऑन टू नंबर 2. नंबर 2 इज yes for all the arts enthusiasts जिन्हें बड़ी बड़ी म्यूजियम्स और गैलरीज अच्छी लगती हैं, आर्ट अप्रिशिएट करना अच्छा लगता है, उनके लिए है ये दूसरा फ्री 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 चीजें टू लर्न. ओके, दिस इज फ्रॉम गूगल आर्ट्स एंड कल्चर. जब आप गूगल पे जाओगे यू विल टाइप इन गूगल आर्ट्स एंड कल्चर, द वेबसाइट विल कम. ओके, नाउ आई विल लिंक इट डाउन बिलो, बट देयर इज अ ट्रिक टू डू दिस. ओके, आप शांति से बैठ जाओ, क्वाइट माहौल में बैठो, बिल्कुल डार्क कर लो एंड गेट रेडी फॉर अ वर्चुअल टूर. इट इज अ 360 डिग्री टूर एंड ट्रस्ट मी, मैंने ये बहुत बार किया है. आई हैव डिफरेंट बैचेस लाइक द आर्ट्स बैच, द innovator batch, these batches that they give. Why? Because आप इतना explore करते हैं. You can do it by the event, date, type, and like this I have seen the Oxford Museum of England, I have seen different libraries, and trust me, it is amazing. ऐसा लगता है like you're definitely virtually right there. But trust me, sitting at home, if you have nothing to do and you're bored to shit and hell, please go on to Google Arts and Culture and discover plethora of museums and art galleries from Egypt to England to India. Any country, any event, any date, you can do that. Thank me later. Okay, now the third one is learning a new language. Yes, absolutely easy peasy is to learn a new language. घर बैठे बैठे you can do this. Netflix देखते, Instagram scroll करते करते इतने बोर हो चुके हो अब आप, और इंग्लिश कितना सीखोगे यार, इंग्लिश आती है आपको, अब एक नई लैंग्वेज ट्राई करो. Okay, so for example, आजकल Mandarin, Spanish, Korean, they are very very in. So people are charging huge amounts of money to teach you these foreign languages, but you are in for a surprise because ये सारी चीजें आप फ्री में सीख सकते हैं. There are different apps for that, but then you cannot practice it out with them. So what we can do is we can have the help of YouTube, जहाँ पे मैं भी आपको बहुत कुछ सिखाती हूँ. But for languages we have different people who are so skilled, and वो अपनी skills जो है आपके साथ share कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, that too free. You nothing have to do, you don't have to do anything, you just have to type in Japanese classes and different channels and different people जो आपको नहीं अच्छे लगते हैं उनको आप हटा सकते हो, and you'll be like नहीं, I want something new. किसी और टीचर का आपको ज़्यादा अच्छा लग सकता है. But what happens when you purchase a course, आप फिर stuck हो गए हो उसके साथ, right? So try and explore different videos of new languages, and it's at your
service. The phone is at your service. The videos are at your service. आप एक language सीखते हो, थोड़ा सा base level सीखा, फिर then you can go to next language as well. आज आपने Spanish सीखा, कल आप Mandarin सीख सकते हो, फिर Korean, Japanese. And yes, I know a few good channels, so I will link them all. Stay tuned. Okay, moving on to our next thing that we can learn online. This is for all the music lovers. जितने भी music lovers हैं एंड आप लोगों के गिटार्स जो हैं घर पे सड़ रहे हैं, क्योंकि हम सब ने लॉकडाउन में ये बहुत किया है, कुछ ना कुछ खरीदा है, हमें कुछ सीखना है, बट वी डोंट गेट दैट टाइम टू डू दैट. लेट्स टेक आउट दैट टाइम एंड start practicing guitar with your own phone, your own YouTube. You can come on it, and no matter kitna bhi time lage, you can just simply click on the video, sit with it, take your time. क्योंकि क्लासेस में आपके साथ वो टाइम स्पेंड नहीं करेगा, राइट? 1 आवर 2 आवर वो बार बार रिपीट नहीं होंगे लेसन्स, बट सबका पेस डिफरेंट होता है. एंड when you are online and when you are learning it here, you have the chance to कितनी भी बार रिवाइंड करो, कितनी भी बार आगे बढ़ाओ, कितनी भी बार लेसन को प्रैक्टिस करते रहो until unless you feel confident that I can play E minor. E minor chord सीखने में मुझे लगता है शायद 1 महीना निकाल दिया मैंने to just learn the E minor chord, and I know it is the very easy one, but it's okay, happens. I am a late learner, slow learner. मैं सीख रही हूँ, सीख जाऊँगी, but yes, definitely you can learn any other music instrument. For example, guitar, piano, whatever you like, your wish, your choice, your time, your space, your zone, whenever you feel comfortable. So yes, that is what you can do that for free. And last but not the least, this is for all the aesthetic sense enthusiasts. Okay, what you can do is आपको कोई भी होम डेकोर, होम इंटीरियर डिजाइनर, आर्किटेक्ट कोर्सेज लेने की जरूरत नहीं है. What you can do is you can hop on to the train of vlogs जो बहुत सारे यूट्यूबर्स बनाते हैं, and they are especially designated vloggers जो सिर्फ मार्केट्स घूमते हैं for good home decor. You can go there, you can watch that video, get inspired, and you can know that how घर की चीजों से ही आप अपने कमरे को या अपने घर को या अपने अपार्टमेंट को, रूम को, जहाँ पे भी आप रहते हो, उसको आप एस्थेटिक कैसे बनाओगे. So this was pretty much it for today's video. I know this is a short one, but I hope this is really interesting. कुछ भी communication या personality development से नहीं था, but I felt like this is very necessary, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, लाइफ में कुछ ना कुछ लर्न करते रहना चाहिए. अगर हम कुछ लर्न नहीं करेंगे, कुछ सीखेंगे नहीं, तो लाइफ बोरिंग नहीं हो जाएगी. So yeah, that was it for today's video. I hope you guys really liked it, and if you did, please do share, like, share and subscribe, comment down below, and I'll see you next time. Thank you.